let's talk about the 12th part of this series, corporate taxes, direct and indirect tax. यानी कि हम इससे पहले 11 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. दिस इज योर 12th लेक्चर वेयर वी गोना स्टडी अबाउट जीएसटी काउंसिल. इससे पहले एटलीस्ट जीएसटी वाले लेक्चर्स ज़रूर देख के आएँ अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल नए हैं. और मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग से पार्ट फर्स्ट से देखते हुए जब आप आएंगे तो आपको एक पूरी प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगी. सो विदाउट एनी डिले, let's start the lecture where we are going to talk about, again I'm saying, GST Council. But before that, I hope if you're new to the channel, you've subscribed the channel and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, please share it with your close friend or your best friend. I'm not saying कि हर दोस्त से share करो, but अपने best friend से आप share कर सकते हैं. So let's move and talk about GST Council. A very short topic. We'll just have to have this understanding of what GST Council is. तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि काउंसिल का मतलब क्या होता है. What is a council? If you look at it or search it in the Google, the meaning of council, it will tell you and it will give you a meaning that council is nothing but it is a group of people elected for a specific purpose. So council का मतलब यही होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लोग होते हैं जिनको इलेक्ट किया गया होता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कि वो ब्रेनस्टॉर्म करें, आइडियाज जनरेट करें, इंटरैक्ट करें आपस में, एंड आफ्टर वोटिंग दे विल कम टू सम डिसीजन अबाउट सम स्पेसिफिक इशू और अ प्रॉब्लम. So that's what a council is. It is basically a group of people elected for a specific purpose. Now, since we are talking about goods and services tax, I hope आपने goods and services का again I am saying, again and again I am saying, आपको ये वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे अगर इससे पहले वाला लेक्चर 11 और लेक्चर 10 आपने नहीं समझा. एटलीस्ट जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये भी अगर आपने नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या होता है जीएसटी काउंसिल. और आगे आने वाले लेक्चर्स जैसे हम पढ़ेंगे जीएसटी नेटवर्क और कलेक्शन ऑफ जीएसटी, लीवाई ऑफ जीएसटी. सो इट्स अगेन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जीएसटी से रिलेटेड लेक्चर्स पहले से देख के आए जो पढ़े हैं और फिर जीएसटी काउंसिल पे आए. सो अब क्योंकि काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं विच इज इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, सो जीएसटी काउंसिल क्या होगी? Basically, it's a very important body responsible for making significant decisions related to the goods and services tax in India. तो इंडिया में ये जो सिंगल टैक्स सिस्टम आया है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, कि भाई टैक्स जो लगेगा वो एक सिंगल टैक्स लगेगा. अर्लियर की तरह नहीं, पहले की तरह नहीं कि भाई हम वैट भी लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगा रहे हैं. अब हम सिर्फ एक टैक्स लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जो स्लैब्स बनाई गई हैं, हमने स्लैब्स के बारे में पढ़ा, उस बेसिस पर सप्लाई ऑफ गुड्स पर टैक्स लगेगा. यानी कि सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में या सर्विस में वैल्यू ऐड होगी, तब नहीं. जैसे पहले होता था टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, अब ऐसा नहीं है. जब वैल्यू ऐड कर रहे हो तब ही कहीं ना कहीं टैक्स ऐड करोगे, एंड दैट इज योर जीएसटी, दैट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो जीएसटी काउंसिल बेसिकली बनाई गई है जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जो भी मेजर डिसीजंस लेने हैं, चेंजेस करने हैं, अपडेट्स लाने हैं, उनसे रिलेटेड बातचीत करने के लिए एक कमिटी या बेसिकली कुछ लोग, जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे, जिसमें कुछ मेन हेड होंगे, जो कि कहीं ना कहीं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट के मेंबर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे, और जो आपस में डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि भाई हमें स्लैब्स किस तरीके से रखनी है, अगर हमें स्लैब्स में कुछ चेंजेस रखने हैं तो क्या चेंजेस रखने हैं, एग्जेम्पशंस क्या रखने हैं, टैक्स रेट्स क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, ओवरऑल all the decisions related to goods and services tax जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्ट लेती है जीएसटी काउंसिल. सो आई थिंक इट्स रियली very crystal clear to you that what a GST council is. It is an important body responsible for making significant decisions
related to goods and services tax in India. Now, what kind of decisions? Basically, it makes recommendations on important issues. So just now I've told you that the issues can be like it can be related to tax rates. So deciding what tax rates should be, what exemptions should be there, what rules and regulations of those exemptions should be there. So it not only ensures that the central government is there, but state government should also be there in uh, getting the getting the solutions of the issues related to GST council, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक important हिस्सा है इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। हमने पढ़ा था ना कि कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जीएसटी के भी। एक होता है सीजीएसटी विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड वी हैव एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड देन वी हैव आईजीएसटी। जब आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है जो भी आपका जीएसटी होता है। So basically, what I trying to mean here is that this GST council, it not only ensures that the central government is working only in this GST council, but state government is also working hand in hand with the central government to make important major decisions related to GST. Okay, so we can say that it ensures that GST is implemented smoothly, because it's a very very important aspect of Indian economy. GST tax, it is a major part of what a government is going to do for the society, for the poor, for the infrastructure, and for that it's really it's really an important system. So managing it is, again, it's really very important how you're managing it. So how smoothly you're managing it, it really depends upon how you are handling the decisions around it, and for that a GST council is made. I hope this is clear to you. So basically, we can say that it ensures that GST is implemented smoothly and that any changes or updates are done in a cooperative manner or in a synchronized manner between the central and state governments. So if there is no such body like GST Council, then what would happen? There would be a situation of confusion. There would be a situation where things are not going to be in a synchronized manner. And if things are not going to be in a synchronized manner, what would happen? चीजें messed up होंगी, कुछ भी पता ही नहीं होगा, अपडेट्स के बारे में पता नहीं होगा। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक बॉडी हो जो कि सोचे जीएसटी के बारे में, जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में, उन अपडेट्स के बारे में जो उन्हें करने हैं, उन एग्जाम्पशंस के बारे में जो टैक्स रेट्स में होने चाहिए, ऑल अबाउट दैट। सो टॉकिंग अबाउट किस तरीके के लोग होते हैं इसमें, सो इट कंसिस्ट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, and that union finance minister basically is a chairperson of that GST council, the main person. Then we have the union minister of state for finance, who is the member, and again the state finance ministers from each state, they are also the member. So that's the basically what the किस तरीके के लोग होते हैं basically the members, all about the members of the GST council. Now talking about the decisions in the GST council, so decisions जो होंगे, ये ऐसा नहीं होता कि भाई they have to come to a common thing, they have to come to a common thing, but again it comes, it at the end of the day, it's like you have to make a decision through voting only. So the decisions in the GST council, they are made through voting. And you have to remember that the central government has this 1/3 of the voting power. On the other hand, if you look at the state government, so they have this 2/3 of the voting power. So while taking the decisions, 2/3 of the voting power is in the hands of state government, and 1/3 of the voting power is in the hand of central government. So that is also something which is important to understand here. So I hope this is clear to you. A very short lecture regarding GST Council. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, और you can use comment section, of course. See you in the next video. Till then, keep studying. Take care.